करना, सिर्फ मेरी बात सुन। ठीक है जी, चलिए। तो हाँ जी, विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? जल्दी बताइए। आज मैंने ना यहाँ लिख के छोड़ा था स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ताकि मुझे याद रहे एक्सप्लेन करने से पहले। चलिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी व्हाट इज एवरेजेस। आप लोग बताइए एवरेज क्या होता है किसी भी चीज का। टोटल ऑफ टाइम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट डेटा, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं जहां से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर होंगी। दैट इज कॉमनली सेड एज एवरेजेस। सो you don't need to go into the definition much. Okay, understand the basic things. First of all, the formula. Okay, now stop typing and start listening. We just have one formula in averages. Okay, you don't need to go with anything else. You just have to remember only one formula. एक मिनट रुक जाओ. And that formula is average is equal to sum of observations divided by number of observations. Okay, so let me elaborate this thing. Let's say you have been given a data. Listen to each and everything very carefully. You have five students A, B, C, D, and E. A scored 50 marks, B scored 52, C scored 45, D scored 47, and E scored, let's say, 0. Okay. And now you have been asked to find the average marks of these five students. So, sum of observation, when I talk about sum of observation, what you will do, you will add all these quantities 50 plus 52 plus 45 plus 47 and plus 0. Okay. And when I say number of observations, so how many number of observations I have? One, see, one, two, three, four, five. You will put simply five here. Now you will do the sum of these five observations and divide it by five. That is simply known as calculating the average. So what you have to keep in mind here is the last observation is zero. Though it will not make any difference in the sum, but it is still an observation. So the counting of observation will be five, not four. Always remember this thing. Don't make this mistake. And believe me, whenever you will get the options, na A, B, C, D. Okay. Among these four options, one option would be like where the number is divided by four, and you can make this mistake. It is a very common thing. It is a very common mistake which students often do. I have been teaching for 4.5 years, and I am seeing this thing. So मैं ये देखता रहता हूँ कि आप लोग किस तरह की गलतियां करते हैं, ताकि मुझे भी एक पता लगे कि भाई मुझे पढ़ाना क्या है आप लोग। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है सीसेट के पेपर में या सीसेट की क्लासेस में कि आपको कंसेप्ट समझाना है। आपको कंसेप्ट आप लोगों के हिसाब से समझाना है कि आप गलतियां क्या करते हैं। चलिए, अगली बात देखते हैं। अच्छा, सिमिलरली अब इस फॉर्मूले को मैं दो और तरीके से लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस फॉर्मूला इन टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन is equal to average into number, and number of observation is equal to sum upon sum of observation divided by average.
बताइए। अंडरस्टूड? टेल मी। ठीक है जी। तो अब आपको कुल मिला के क्या रखना है ध्यान में? अपने ध्यान में क्या रखना है बताइए? आपने सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ, सॉरी, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। और तो कुछ आपने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। उससे ये दोनों फॉर्मूलेज निकल करके आएंगे। बोलो, इतनी चीज में क्लैरिटी है? शैल आई प्रोसीड? अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे हैव फ्रॉम दिस टॉपिक? ओके, वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक मिनट रुकना। टाइप वन, द बेसिक वंस। ओके, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, कि दिया हुआ है आपको क्या, सम डेटा इज गिवन एंड यू सिंपली हैव टू फाइंड द एवरेज। नाउ टाइप टू, you may get average speed question. So that thing we will learn in time and distance. This I will not explain here. This I will explain in time and distance portion. Type 3 is when there is some wrong data. When there is some wrong data or some new entry into the data. Some new entry into the data. For example, the marks were recorded wrongly. You were supposed to enter 50 and you entered, let's say, 55. So in such case, what will you do? You will eliminate the wrong data and you will add the right data. That's it. कोई फालतू ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, add the difference of two or subtract the difference of two. No, nothing. From the total sum, subtract the wrong data, add the right data. It's as simple as that. If you have some new entry, so the number of observation will change. Number of observations will change. Accordingly, you will manipulate the question. In this case, the number of observations will remain same. Okay. Type 4 is when data is moving among the different sets. Data is moving among the different sets. For example, let's say there is a class 10th, section A, section B. Some students are moved from section A to section B. Some are moved from section B to section A. So the examiner may ask you ki, what will be the impact on total average? Will it increase? Will it decrease? Or something like that. And maybe the last type, I would say, the problem on ages. For example, the average age of family members is given. And then they will ask कि after 5 years, what will be the average age? So always remember one thing. यहाँ पर एक चीज, let's say there are 5 family members. Okay. And today their average age is 25. So their sum would be what? 5 into 25, that is 125. And now if I ask you what would be the average age after 5 years, this is present time. And now I have said what would be the average age after 5 years. So always remember this thing. When you will increase the sum, you will not add only 5. The age of each family member will be increased by 5. So in sum, you will add 25. So it will become 150. Now divided by 5. So it would be 30. Understood? बताइए। ये टाइप 5 के अंदर ना, जो मैंने आपको लास्ट बताया है, ये this last thing, this is the most common mistake which we do. 125 after 5 years, it would be 130 divided by 5. So answer will be what? 26. And believe me, there will be a option 26. बोलो, आ गई इतनी बात समझ में बच्चे सब लोगों को? If you have any doubt, you can ask right now. Shall I proceed?
तो अब कुछ सवाल देखते हैं। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है किसी काम के लिए। चलो आइए, पहला ही सवाल पढ़िए सब लोग ध्यान से। यू विल बी गिवन 1 मिनट। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। टाइमर से करेंगे बिल्कुल। 1 मिनट मैं आप लोगों को दूंगा और 1 मिनट के बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। चलो, तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है कमल, गुड, बट यू हैव टू वेट नाउ। ओके। Okay, can we do one thing from tomorrow? Like, if I will share the slides 1 hour prior to the class, so that you can look at the questions, and then we will start the class. I will explain the concepts, and I will directly explain the questions. कैसा तरीका है? अच्छा, अच्छी बात है ना ये? हाँ, ठीक है। चलो। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जो भी आंसर बताएंगे वो मेरे को डायरेक्टली मैसेज करेंगे, कॉमन चैट में नहीं लिखेंगे प्लीज। सेट योर मैसेजेस टू मी ओनली। हाँ देखिए, in a class in a class, okay, so I have a class. Let's say this is my class A. In this class I have three groups, A, B, and C. Within the class I have three groups. Okay, if one student from group A and two students from group B are shifted to group C, so one here and two here, then what happens to the average weight of the student of the class? अब बेटा वो क्या पूछ रहा है देखो, within the class you have three groups. Yeah, let's say this is called this as class X. In this class X you have three groups A, B, C, and students are moving with it. With students are moving intergroup, but they are within the class. Okay, within the class. So basically the sum and number of observation for this class X will remain same. That's why the observation will neither increase nor decrease. It will remain same. Bolo. Understood, Aji? Shall I proceed? चलो जी, अगला सवाल देखो। जल्दी से बनाओ इस सवाल को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, फटाफट से बना लो। बहुत सिंपल सा सवाल है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 5 and 49 विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देखिए। नाउ learn two concepts here. Learn two concepts here. Number one thing, divisibility test of 5. Any number which ends with 0 or 5 is divisible by 5. बोलो, बात ठीक है कि नहीं है? कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंत में
0 या 5 है, where the unit place is 0 or 5, that number would be divisible by 5. And second thing, the sum of AP. Okay, so sum of AP is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. But in this question, you will not be, this thing is not required. Okay, if you know this thing, so it will become a little easy, but कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी आप. Okay, so what will be the observations? 5, 10, then again 15, 20, 25, 30, 35, उसके बाद क्या है बताइए? 40 and 45. So how many observations I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have 9 observations. How many observations I have? 9 observations. And all these observations are in AP. जल्दी से बताइए. Every observation is increasing by 5. ठीक है. So always remember, when the observations are in AP and they are odd in number, so the number of observations are odd, like 9. Arrange them in ascending order and pick the central number, 25. That would be the average. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करो? सिंपली इन सबको ऐड करो ना. वी आर इंक्लूडिंग 5 here, मीनाक्षी. लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूडिंग 5. मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, पहले वो बात समझ लो. ठीक है. सो इंक्लूड कर लिया हमने 5 को भी. सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है? 25. यहां पर देख रहे हैं आप, इसके बाद भी 4 नंबर है एंड इससे पहले भी 4 नंबर है, which means this is the central tendency. And if you don't understand this thing, then simply add all the numbers, divide them by 9, you will get 25. बोलो जी, डन है? Shall I proceed? चलो, ये सवाल देखो जल्दी से. And your time starts now. गुड. चलिए, shall I explain? अब जिन लोगों से नहीं हुआ वो इधर देखिए प्लीज, यहां पर देखेंगे ध्यान से. देखो, एवरेज. हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. Now, nobody will type. Please listen to me. Average of 11 numbers. So let's say 11 numbers are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. The average of these 11 numbers was 30. Therefore, the sum would be 330. How I have reached here? Average is equal to sum upon number of observation.
So I have been given average sum divided by 11. So 11 into 30 is 330. इतनी चीज क्लियर है up to this point, up to this 330? Is it clear to you people? Okay. Now taking the first six numbers, which means A, B, C, D, E, and F. So if I take first six number and their average is 17.5, number of observation are 6, so sum will be 105. Similarly, for the last six observations, average is 42.5, number of observations are again 6, and this is 255. Bolo, up to this point, is it clear? Now I added both the numbers 105 and 255. This is 355. When I took the average of first 11 numbers, this was 330. When I have added the average of first six and last six, it is 355. Can you see the sum is increased by 25? Bolo. The sum is increased by 25. Why it is so? Because F is the extra observation. It is coming in both the observation. So that's why हाँ ठीक है, वो मैं ठीक कर लूंगा, उसकी टेंशन ना लो, उसको मैं 360 बना लूंगा। ठीक है, वो हो जाती है, मेरे से गलती है, मेरा मैथ्स ना थोड़ा कमजोर है। आई एम अ लिटिल स्लो इन मैथमेटिक्स, सो दैट्स व्हाई आई मेक मिस्टेक्स। ठीक है, हाँ। सो 360 माइनस 330 इज 30, because now this 30, it would be F only, because the sum is increasing, because this F is coming on both the sides। बोलो आई बात समझ में? So what would be the answer? Answer is 30। बताओ बाला, आया समझ में बेटा? Crystal clear। ठीक है, ओके। एंड टेल मी वन थिंग, एम आई नॉट अलाउड टू डू मिस्टेक्स? हाँ, मैं गलती नहीं कर सकता क्या? आई कैन, बट यू पीपल कैन नॉट। Okay, I am allowed to make mistakes, but you people are not allowed to make mistakes. Because if you will do such errors like me, you will lose 1 year. It will cost you one extra attempt. चलो, अगला सवाल देखें। कितने बना लिए हम लोगों ने? प्रॉब्लम हो भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको बनाओ भाई। There are two batches, A and B of a class. You have good 1 minute to solve the question. Once you are done, please let me know. Okay, now listen to me. What is given in the question? There are two batches, A and B. Batch, ठीक है। अच्छा, अब सुन लो मेरी बात को। Batch A consists of 36 students and batch B consists of 44 students. Find the average weight of whole class if the average weight of batch A is 40 and that of batch B is 35. What mistake you can do? You can directly add
40 plus 35 and divide it by 2, which means 75 by 2. अगर आप ये करोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर? 37.5. ओके, जो कि क्या है, गलत है. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. So what is the actual process to solve this question? Never do this thing कि batch A or batch B. Why? Because the number of students in both the batches are different. In batch A, I have 36 students and in batch B, I have 44 students. So what will I do? First of all, let me write the formula here. Average is equal to sum upon number of observation. Sum of observation divided by number of observation. Now batch A. In batch A, the number of observation, is 36 and average of observations is what? 40. Therefore, the sum will be average into number. तो कितना होगा ये? 40 into 36, which will be 1440. Now batch B. Number of observations कितने हैं batch B में? How many people I have? 44 students. Average of observation कितने हैं batch B का? 35. So sum कितना होगा batch B का? Again 35 into 44. तो क्या बनेगा जी? 35 into 44. 1540. Now to calculate the average of class A. Average of class A. What will I do? I will add these two numbers. 1 plus 2. तो वो कितना होगा मेरे पास? 1440 प्लस 1540. तो क्या आएगा भाई? 1540 प्लस 1440. It would be 2980 and divided by what? देखो 36 प्लस 44. So 36 प्लस 44 इज कितना बनेगा आपका? 80. And now the answer would be what? 8 3 are 24. बचेंगे 4. 8 48. 36 आंसर है क्या? अरे मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा 5 बचेंगे. सॉरी 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 सॉरी. I am really sorry. I did a calculation error. 298 divided by 5. Sorry. 8. हाँ 37.25 will be the answer. तो आंसर कितना हुआ? D. 37.25. बोलो. अंडरस्टूड? पक्का? पक्की पक्की बात बता दो. समझे हो कि नहीं समझे हो? Shall I proceed? यार मेरी आज कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों. ये सवाल जो सही करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी. पर गूगल से नहीं देखोगे, अपने आप करोगे. 1 मिनट शुरू हो चुका है तुम्हारा. ये सवाल जो सही करेगा वो मुझे चॉकलेट देगा. भेज देना. एड्रेस बता दूंगा. टेक माई एड्रेस एंड सेंड सम चॉकलेट्स टू मी. कैन ऑल्सो सेंड कुकीज, चॉकलेट्स, some other expensive gifts like iPhone or maybe a good car or something like that. You can send anything.
Good. Now, please stop doing it and listen here. देखो, the average age of a class of 29 students is 20 years. So what I did, average of 29 students is 20 year. So sum कितना हो जाता है आपका बेटा, average into number of observation, that is 580. बोलो, understood up to here, this point? कोई दिक्कत? Now, then if the age of teacher is included, now the teacher's age is also included. So number of observations अब कितने होंगे मेरे पास, बताइए? If I will include the teacher's age on including teacher, so number of observations कितने हो जाएंगे मेरे पास, 29 plus 1, 30. Average is increased by 3 months. So here is the catch. Now listen it carefully. Here is the catch. Earlier, the average is given in years, 20 years. And here is only 3 months. So you have to convert these 3 months into a period of 1 year. So as 1 year is equal to 12 months, therefore 1 month is equal to 1 by 12 years. Similarly, 3 months is equal to 1 by 12 into 3, that is 1 by 4 year. Quarter of a year. समझ गए? एक क्वार्टर 3 महीने का होता है. And similarly, we have 4 quarters of 3 months each. So new average will be what? New average will be 580. Sorry, 580 तो sum है. Oh my God. अब मैं क्या करूं यार, ये अंडू करने का कोई ऑप्शन होता है क्या? यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? हे भगवान, हे प्रभु जगन्नाथ, प्रेमानंद, ये क्या हुआ? यार shit, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है. ओके, सो फटाफट से देखेंगे. एवरेज ऑफ 29 is 20, therefore sum is 29 into 20, that is 580. Sum is कितना हो गया, 580. And now what it would be, क्या बोल रहा था मैं आगे, if the age of teacher is included, so when the teacher is included, तो कितना हो गया, 29 plus 1, 30. Average is increased by 3 months, so 3 months will be 3 by 12, that is 1 by 4 year. So न्यू एवरेज कितना होगा आपके पास, पहले कितना था, 20 plus 1 by 4, so it would be 80 plus 1 is equal to 81 by 4. This is the new average. Okay, and new number of observations कितने हैं, 30, तो sum कितना होगा, न्यू सम 81 by 4 into 30, तो कितना बचेगा भैया आपके पास, ये 215. कितना आएगा, जल्दी बोलिए. टीचर की एज पॉइंट्स में आई है आप लोगों की. 81 into 15 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया, 607.5. सो दिस इज द न्यू सम एंड दिस इज द प्रीवियस सम. तो टीचर का एज कितना होगा, टीचर्स एज इज इक्वल टू 607.5 माइनस 580, कितना बचेगा, 572. 27.5 years is the correct answer. बोलो, हो गई बात खत्म? Shall I proceed?
ये सवाल 2023 का है, इसको अभी देखेंगे लास्ट तक। हाँ, पहले इसको करो फटाफट से, सॉल्व दिस वन। Okay, now a library has an average 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday. तो बेटा मतलब क्या है, 30 दिनों का महीना है. We have a month of 30 days, 1 to 30. If the first day, day 1 is Sunday, so 1 plus 7 is 8, 15, 22 and 29. So 1, 2, 3, 4, 5. These all will be what? Sundays. So I will be having 5 Sunday. And on Sundays, 510 visitors on Sunday. So average of Sundays कितना है? 510. How many Sundays I have? Number of Sundays कितने हैं? 5. तो sum कितना होगा मेरे पास बच्चे? 0, 5, 25. Understood? Up to this point बताइए मेरे को जल्दी से. ठीक है. Now, after 5 Sundays, if I have removed 5 Sundays from a month of 30, then I have 25 remaining days. 25 remaining days. So average is equal to कितना है? 240. Number of observations I have again 25. Therefore, sum will be what? कितना हो जाएगा भाई सम यहाँ पे? 24 और 25 कितने होते हैं? 24 इंटू 25 आपके आएगा 600. इट वुड बी, हाँ, इट वुड बी 600. तो I would be having 6,000 visitors on the remaining days. टोटल एवरेज कितना होगा आपके पास? टोटल एवरेज होगा एट दीज टू सम्स, यानी 2550 डिवाइडेड बाय 6,000, 5558 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 30. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो माय फाइनल आंसर वुड बी एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर. So therefore it would be 8,555 divided by 30. What answer I will get? 8,555 divided by 30. 285.1. क्या कर दिया मैंने? 6,000. अरे यार कुछ हो रहा है. हाँ ठीक है, 285 कंप्लीट. आज कुछ तो दिक्कत है. ऐसे कैसे कर सकता है? इतनी इतनी गलतियां. कौन ही पिला रहा है चाय? प्रेशर बहुत है ना, मालिक भूल गए हो काम का. काम बहुत है ना, टेंशन बहुत है मालिक को, मालिक भूल गए. ये सवाल अच्छा सवाल है. Neither I have been given the initial average nor I have the number of students. So you have to let both the variables. Okay, you have to let both the variables.
नवीन आंसर बेटा कॉमन चैट में मत टाइप करो, मेरे को डायरेक्टली भेज दो। इतना जल्दी कैसे निकाल दिया तुम लोग? हाँ? है तुम्हारे अंदर दिमाग से? बहुत मौजी हो गए हो तुम लोग ना, मजे में आ जाते हो बहुत जल्दी। ठीक है, चलो। ओके, नाउ सी हियर, a pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63, which means you were supposed to enter 63 but you entered 83. Hmm. Due to the average marks for the whole class got increased by 1.5. So let's say number of students. How to solve this? Number of students, let's say x, and initial average. Initial average किसके साथ? With 83. Initial average with 83. मतलब when the number was entered 83. Okay, so average was y. Let's say consider this y average को. Therefore sum कितना होगा यहाँ पे? x into y. बोलो। अंडरस्टूड? बिकॉज सम क्या होता है मेरे पास? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट? जल्दी बता दीजिए। नाउ इन सेकंड केस number of students number of students will be how much? X. That is same thing. Okay, but what would be the average here? What would be the average here with 63? What would be the average with 63? 0. This is half. 0.5 less than the previous one. बोलो। यश बेटा डायरेक्ट मैसेज करो, आंसर कॉमन चैट में टाइप नहीं करोगे? जल्दी बताइए। When you will take 63, the correct observation, what will happen in this scenario? The average would be minus 0.5. Okay, so therefore the sum will be what? Sum will be x into y minus 0.5. Therefore xy minus 0.5x. Up to this point. Understood? जल्दी बोलो। दिस इज सम वन एंड दिस इज सम टू। जल्दी बताइए, समझ गए इतनी बात को? जिनका हो जाता है वो यस मत लिखो, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, दोज हु आर लैगिंग। Why I have subtracted this 0.5? Because here it is mentioned in the question. Now, what is the difference between sum 1 and sum 2? The difference is of 20 marks. There is a 20 marks difference between sum 1 and sum 2. Because in sum 1, the observation was 83 and in sum 2, the observation is 63. Rest other observations are same. Therefore, there would be a difference of 20 marks between sum 1 and sum 2. Therefore, xy minus xy and minus. So this minus and minus will become plus 0.5 x is equal to 20. This will be cancelled. X is equal to 20 upon 0.5, 40. And what was x? Number of students. And what I need to find the number of pupil in the class. So number of pupil in the class are 40. Bolo ji. Done. Shall I proceed? Solve this question. Then I will explain.
So listen here now, please stop solving this. I have to explain few things with this question. In such questions, what you have to do, first you have to check the first statement individually, whether you are able to get the answer with the first statement or not. Okay. Now, please listen here carefully. This is the common information. This is the common information. And this is the question which you have to answer. Hmm. With this common information, when you attach the statement number one, if let's say the result was X, and that this X result is the answer of your question, which is asked here. What will you do after that? You may left the question and you may say that statement one alone is sufficient to answer the question, but you don't have to do that. You have to check the second statement as well. Check the second statement as well. And you, if you get the Y, okay, result Y. And that result Y is also the answer of your question, what is asked here. So what will you say? The question can be answered by using either of the statement alone. Now, what happened in the second scenario? You are not able to get the answer from statement one, and you are not able to get the answer from statement two as well alone. But after combining the result of X and Y, you are able to solve the question, or you are able to get the answer. Understood? So what will you answer? The question can be answered by using both the statements together, but not either of the statement alone. ओके जी. सिमिलरली किसी एक स्टेटमेंट से आपको मिलता है, दूसरी से नहीं मिलता है, सो यू विल से स्टेटमेंट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट नॉट सेकंड स्टेटमेंट अलोन. इस तरीके से. सो यू हैव टू चेक बोथ द स्टेटमेंट्स हियर. In this question, what will happen now? Please see here. What I have been given, the average age of PQRS. P plus Q plus R plus S divided by 4 is equal to 30. Therefore, P plus Q plus R plus S is 120. This is given to me. And now I have been asked how old is R. I have been given two things. First is P plus R is 60. P plus R is equal to 60. Using statement 1, if P plus R is 60, then Q plus S is also 60. I have this thing. But still, I am not able to find how old is R. Now I will proceed to the second statement. S is 10 years younger than R, which means S is equal to R minus 10. Similarly, I can put this. Now, with this statement 2 alone, I am not able to get anything. If I will put it here also, in this common result, P plus Q plus R plus S is equal to 120, I will not get anything. But let me put this in the first statement. So what will I get? Q plus R minus 10 is equal to 60. I am replacing this S with R minus 10. So what will I get? Q plus R is equal to 70. One, I have P plus R is equal to 60. Again, I have three variables and only two statements. And or only, I can say only what I have. The two equations to solve the three variables. Even if I will put the value of S here, what will I get? P plus Q plus R minus 10 is equal to 120. Therefore, P plus Q plus twice of R is equal to 130. स्टिल अभी भी कुछ नहीं मिलेगा मेरे को. यहां से अगर तुम एक वैल्यू भी पुट कर देते हो, मान लो Q प्लस आर को तुम 70 रिप्लेस भी कर देते हो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? P प्लस आर इज इक्वल टू अगेन 60. ठीक है. तो ये भी स्टेटमेंट सेम है, ये भी स्टेटमेंट सेम है. कुल मिलाकर के क्या हो रहा है? Even after using both the statements, I am not able to reach to a conclusion that how old is R. So my answer would be both 1 and 2 are not sufficient to answer the question. Bolo, have you understood this question or not? ना हो तो रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ में. अंडरस्टूड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. चलिए इसको बनाते हैं. मेरे साथ बनाएंगे, इसको ध्यान से सुनते रहेंगे.
How many candidates were interviewed every day by panel A out of three panels A, B and C? I have been given three panels A, B, C. पहला है three panels on an average interview 15 candidates every day. Average दिया है, which means this statement says that A plus B plus C by 3 is equal to 15. Therefore, A plus B plus C is equal to 15 into 3, 45. But I am not able to decode from the statement number 1 that how many candidates are interviewed by each panel A, B, and C. So I will keep this result with me and now I will go with the second statement. Bolo. Understood? Up to here? The result of first statement, is that understood or not to you people? Okay. Now I am going to use the second statement, beta. Please see here. Second statement, out of total of 45 candidates interviewed every day by three panels, which means in second statement, the first line says A plus B plus C is equal to 45. The number of candidates interviewed by panel A is more by 2 than the candidates interviewed by panel C. अगर A ने C से दो कैंडिडेट ज्यादा रखे हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसकी जगह? कैन आई रिप्लेस C with A minus 2? बोलो yes or no. Simply tell me. Can I replace C with A minus 2? Because it is given to me in the question that A has interviewed two more than the candidates interviewed by panel C. And is one more than interviewed by panel B. और B से एक ज्यादा करा है. ठीक है, बी से एक ज्यादा करा है तो क्या मैं बी की जगह पर ए माइनस वन लिख सकता हूं? तो क्या ये लिख दूं मैं ए प्लस ए माइनस वन प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू 45? बोलो, विल यू से एनीथिंग टू मी? मारोगे तो नहीं मेरे को? मारोगे क्यों यार वैसे? और मारोगे भी कैसे इतने दूर से? हिम्मत तो बहुत है तुम लोगों के अंदर, मौका नहीं है तुम्हारे पास. यू विल वॉच द रिकॉर्डिंग. ओके. तुम्हें तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारा. हाँ. तो क्या है? It was given to me that A plus B plus C have interviewed 45 candidates in total, and A has interviewed two candidates more than panel C. So the number of candidates of panel C, I replaced it as A minus 2. And the number of candidates of panel B is one less than the candidates interviewed by A. It is directly mentioned here. So what I did, I write A minus 1. अब क्या होगा ये? Thrice of A minus 3 is 42. So A would be 14. मिल गया मेरे को आंसर. इंटरव्यूड बाय पैनल ए कितने करे? 14. नाउ प्लीज टेल मी हेयर, डिड आई यूज द फर्स्ट स्टेटमेंट while reaching to the conclusion? Did I use the first statement? बताते जाओ मेरे को, पहली बात बताओ. Did I use the first statement? No. Second thing, was second statement alone enough to answer the question? Yes. Was first statement alone was sufficient to answer the question? No. Do I need the result of both the statement 1 plus 2? No. So what I'm doing, using statement 2 alone is sufficient to answer the question, but not 1. So second alone sufficient, while 1 alone not sufficient to answer the question. कहो, आ गई बात समझ में? जल्दी बताओ.
यस। तो आखिरी सवाल करें क्लास का। शैल आई मूव टू द लास्ट क्वेश्चन? ओके, सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर बेटा, अभी 2023 का है। इसको आप जल्दी से बनाएंगे, चुपचाप तसल्ली के साथ, कोई पंगेबाजी नहीं। आंसर सिर्फ मुझे भेजेंगे। इन द मीन वाइल आई एम शेयरिंग द अदर वर्कशीट्स विद यू पीपल फॉर प्रैक्टिस। दिस लेक्चर आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब आज रात को, एंड you will get the link. You can share it with your family and friends. कम ऑन, पर वो लेक्चर देख क्यों रहे हैं मेरा? उन्हें उनको भाई यूपीएससी की तैयारी मत करवाना भाई बहन को, ठीक? क्यों बर्बाद करते हो बच्चों को? अच्छा है, तुम ना सब डॉक्टर बन जाए, नर्सिंग होम खोल लेना तुम अपना, ठीक है? मम्मी न्यूरोलॉजिस्ट, पापा ऑर्थोपेडिशियन, बहन को कौन सा कराओगे? कार्डियोलॉजी, ठीक है। इलाज तुम फिर हमें डिस्काउंट मिलेगा तुम्हारे फैमिली से तुम्हारे नर्सिंग होम में इलाज कराने? आंसर बताओ बेटा, कमल जी मेरे को आंसर बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा है? वो तो निकल ही जाएगा, एज एज तो तुम फाइंड कर लोगे। गुड, अब हुई ना बात। चलिए, लिसन हियर, हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, I will write the common information what I have been given commonly. I will write that common part. For five children, the with ages A, B, C, D, E, which means A is the youngest and E is the oldest. Any two successive ages differ by 2 years. This means that if age of A is A, then age of B will be A plus 2, age of C will be A plus 3, age of D will be A plus 4. Sorry, just a minute, गलत लिख दिया मैंने. Common info again. So this means that if age of A is A, age of B will be A plus 2, age of C will be A plus 4, age of D will be A plus 6, and age of E will be A plus 8. बताओ, अंडरस्टूड अप टू हेयर? यही दिया हुआ है उसने, दो सक्सेसिव की एज कितनी है? 2 साल से अंतर करती है।
हाँ यश, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, गलत है तुम्हारा आंसर। अरे बेटा माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, उस बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ व्हाट इज गिवन टू मी, द एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट। सो हु इज द एल्डेस्ट, ई, and who is the youngest, A, and what is the relationship between their ages? The eldest one is 3 times older than the youngest one. Therefore, if I will multiply the age of younger one with 3, so it will reach to the age of the oldest one, that is E. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A plus 8 is equal to thrice of A because the age was A only. Therefore, 8 is equal to 2A and A is equal to 4. So the youngest one was 4. Again 6. It would be what? 10. It would be what? कितना आया, 4 आया ना, हाँ 4 और 2 6, 4 और 4 8. It would be 10 and it would be 12. I got the age of everyone for 5 children's. Successive, what is the age of the youngest child? The age of the youngest child is 4. Did I get the answer or not? Did I get the answer or not? जल्दी बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके, स्टेटमेंट नंबर 1 को यूज करके। अच्छा, नाउ व्हाट शुड बी द सेकंड स्टेप? डू आई नीड टू चेक सेकंड स्टेटमेंट और नॉट? डू आई नीड टू चेक द सेकंड स्टेटमेंट और नॉट? यस, आई नीड टू चेक द सेकंड स्टेटमेंट। और वही है ना कि तुम लोग ना तसल्ली नहीं रखोगे। देवर्षि, क्लास अटेंड करनी है, कायदे से करो, फोकस के साथ। क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया है, जितने भी लोग आंसर ए बोल रहे हैं वो ध्यान ध्यान क्या दिया है आप लोगों ने पीछे? जब मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली आप लोगों ने चेक करनी है। अब बताओ, पहली स्टेटमेंट से आंसर मिला या नहीं मिला? I got the answer from first statement. Now we have to check the second statement as well. The average age of children is 8 years, which means ये जो जितना भी सारा आपका डेटा है ना, this means that A+2 plus A+4 plus A+6 plus A+8 divided by 5 किसके बराबर है ये एवरेज? दिस एवरेज इज इक्वल टू 8. नाउ व्हेन आई विल ऐड देम व्हाट विल हैपन, 1 2 3 4 5, 5A plus 4 plus 2 6, 6 plus 6 12 plus 8 20 divided by 5 is equal to 8. So from here when I will solve this linear equation, my A would be what? 4 again. अब क्या हुआ? Which means by using either of the statement alone I can get the answer. If I will attach statement 1 with this common information, I get the answer A is equal to 4. If I attach the second statement with the common information, then also I am able to reach to a conclusion, which means my answer would be the question can be answered by using either statement alone. That's why the 2023 paper was difficult. Because in this question, challenge was not to find the age of the youngest child, but challenge was to take the correct option after finding the age. Most of you were able to find the correct age, but you got confused between choosing A और B, क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं हो। ठीक है, बताओ आगे इतनी बात समझ में? अब हो जाएगा एवरेजेस या नहीं होगा? डन। हाँ जी, आई हैव सेंड द दोस, क्या बोलते हैं उसको यार, वो अदर वर्कशीट्स, होमवर्क वर्कशीट्स मैंने तुम लोगों को भेजी हैं, उनको सॉल्व करो खुद से। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट है। यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली लाइक 30-35 क्वेश्चंस वुड बी देयर, एंड कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ऑल द concepts, all the basic things I have told you, you have to use these things only. उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है?
हाउ वाज द क्लास? ठीक है, इसको अपलोड करके मैं तुम लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। और ठीक है, कल हम लोग करेंगे, कल आई गेस परसेंटेजेस और प्रॉफिट लॉस, ईदर ऑफ द टू टॉपिक वी विल डू। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। अबे तो जा रहे।